Namaskar दोस्तों and welcome to SM Smart Profile Bank Nifty and Nifty analysis for 21st November 25. Friends, this is an educational video जिसमें हम market profile and order flow charts को use करके market की direction, areas of absorption, exhaustion and possible traps को identify करते हैं. Market profile and order flow को combine करके एक possible trading area देखते हैं. We do not give any type of trading tips and advice. Friends, हम SEBI registered नहीं हैं. Please follow and subscribe to us to understand market profile and order flow for educational purposes only. फ्रेंड्स, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें हम रेगुलर अपडेट्स देते हैं कि मार्केट प्रोफाइल कैसे एक्ट कर रहा है मार्केट में फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑर्डर फ्लो कैसे एक्ट कर रहा है. आई एम श्योर यू विल फाइंड दैट टेलीग्राम चैनल टू बी यूजफुल. आप लोगों की रिक्वेस्ट पे वो टेलीग्राम चैनल हमने खोला है. प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. उसका लिंक यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. Now, having said that, friends, let me just, give you a quick recap of what I had said tomorrow. I told you that the market is in a state of development. I will be slightly bullish, and if the market develops value above this volume area, there are chances of the market going up. So let's see what happened. The market opened आउटसाइड yesterday's value area. तो जब वैल्यू एरिया के बाहर खुलती है तो व्हाट डू वी कॉल इट एन आउट ऑफ बैलेंस ओपनिंग. आफ्टर ओपनिंग व्हाट हैपेंड, द मार्केट वेंट अप टू टेस्ट, डिड नॉट फाइंड द बायर्स एंड केम डाउन. जब वो नीचे आया, इट फेल्ड टू गेट एन एक्सटेंशन. लेट मी जस्ट split this for you so that I can explain to you better. हुआ क्या, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई. बी पीरियड में इसने एक पुअर लो बनाया. अगर आप ए और बी देखो तो इट वाज अ पुअर लो एंड देन इट स्टार्टेड गोइंग अप अगेन. यहाँ से रिजेक्शन लिया एंड देन इट केम डाउन. सी पीरियड में उसने नीचे आया है. इसने एक ऑक्शन फेलियर है. दिस इज एन ऑक्शन फेलियर बिकॉज देयर वाज नो एक्सटेंशन ऑफ सी पीरियड टीपीओ below this portion. ये जो वॉल्यूम एरिया है, this acted as support like we had expected it to. एक ऑक्शन फेलियर हुआ एंड सी प्रिंट में मार्केट ऊपर गई विद अ ब्रेकआउट इन दी जी पीरियड. एक हमारे पास आईबी जो था, ये हमारे पास एक स्मॉल आईबी था, और स्मॉल आईबी में जब एक्सटेंशन होती है तो हमें 1 आईबी मिल तो जाता ही है. स्मॉल आईबी में usually one can even expect a 2 IB 3 IB sort of stuff, but we didn't get that. वो मिला नहीं. एक पुअर हाई बना है, एक इनकम्प्लीट ऑक्शन यहाँ रह गई है एंड देन द मार्केट केम एंड क्लोज्ड एट द वैल्यू एरिया. एक डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे बना है और हमारा रोटेशन फैक्टर पॉजिटिव है. सो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है कि टुडे हम एक लोअर डिस्ट्रीब्यूशन से एक हायर डिस्ट्रीब्यूशन में आए हैं और एक्सेप्टेंस हमारी लेटर सेशन में हुई है इन द हायर डिस्ट्रीब्यूशन. आईबी स्मॉल था, एक्सेप्टेंस अबव आईबी हमारे लिए काफी मीनिंगफुल है. बायर्स ओवरकेम, ये इनिशियल पार्टिसिपेशन को जी पीरियड में बायर्स ओवरकेम. नाउ let us see what can happen tomorrow. And whenever I told you on the, अगर आप ये ध्यान से देखो तो एक डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे हमें पहले भी मिला है. Let's see where we got this double distribution day. Here it is, 7th November है ना ये. Yeah, 7th November को हमें एक डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे मिला है. And if you go back to the 7th November video and see what I have said over there, the same things are going to apply over here also. Over here I did tell you that treat both these days as a separate day. So over here also both these value areas, the upper value area and the lower value area, are to be treated as a separate day. अगर हम इसको मार्क कर लेते हैं ऐसे करके, तो ये एक एरिया हो गया, ये एक एरिया. दिस इज वन डे, दिस इज अनदर डे. नाउ इफ द मार्केट opens in this area, above this area,
एंड ये पुअर हाई निकाल के हमें एक्सेप्टेंस मिलती है, देन वी आर गोइंग टू फाइंड द मार्केट इज गोइंग टू गो अप फर्दर. अगर मार्केट वैल्यू एरिया में खुलती है and it takes rejection from here and goes up, that is also a possibility. But if the market opens into the lower areas, there can again be a test of the unfinished of the failed auction, and the market may take support from here and go up. But whatever, there is a low possibility of the market coming all the way down. I don't think that should happen, but then possibilities always exist. We cannot say कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, पर प्रोबेबिलिटी यही है कि if the market opens above this and sustains, spends a little time, then we are definitely looking forward to another high. Otherwise, both these value areas should be treated as separate days, right? And we should mark the IB, and we should also mark the lower IB. So these can act as support or resistances, and ये पुअर हाई को भी मार्क करना चाहिए, and ये अनफिनिश्ड ऑक्शन को भी माइंड में रखना चाहिए. नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन मार्केट कहाँ खुलती है and how is the acceptance, right? So answers to this we will get tomorrow only. But जब आप मार्केट प्रोफाइल को ऑर्डर फ्लो के साथ कंबाइन करते हैं तो इट गिव्स वेरी ब्यूटीफुल results. Today was not an easy day, by the way, let me tell you, because इतना small IB बना था और इतनी ज़्यादा fluctuation थी, and the market was sideways for such a long time. You know, it was just like giving up on, uh, even trying to attempt to uh, take a trade in this sort of an atmosphere. But you see the beauty of the market profile. Market profile, यहाँ order flow को क्या होता है? It opens. This is the first 5-minute candle, and I have always told you, wait for the market to open. Don't depend so much on gift nifty. कितना gap up दिखा रहा था spot में? And what happened over here in futures? मार्केट खुलती कहाँ पे? 59,300 के आसपास खुली है मार्केट. सो समवेयर अराउंड हेयर द मार्केट ओपन, ऊपर जाके टेस्ट किया, नीचे आया, एंड यू कैन सी कि स्लोली 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 ये मैंने एक मार्क किया हुआ है. व्हाई डिड आई मार्क दिस? यू हैव टू स्टडी दी 925 candle. Study what is happening over here. Ask me questions, I will answer them. But to know more about it, you have to ask questions. Otherwise, how will I know what you want to know? You can DM me directly also. Then I mark this candle again, right? And after this candle which I had marked, you will find that the market went sideways till it gave a breakout in the 1230 candle. टेलीग्राम चैनल में मैंने आपको बताया था कि ये अच्छा ब्रेकआउट, मुझे तो ये कैंडल पसंद नहीं आई थी, and I was expecting the market to come down back, which it did, and then went sideways again all the way, right? So this is what happened today. Most of the time it was sideways. G period में जाके breakout आया है. It was a difficult day to detect and take a call, but nevertheless, when you combine both order flow and market profile, many things happen. Now you would like to know कि मैंने ये area क्यों mark किया हुआ है. So I did mark this area initially. I made this into a 30-minute chart. 30-minute chart में बनाकर मैंने ये area mark किया था. Let me share it with you. This is the area that I marked. When this candle was made, मैंने first two 30 minutes candle बनी थी, that is the IB period. So then I marked this area, and you will see that even this candle, the C period did not sustain, D period did not sustain above it, E period also did not stay above it, F period also did not sustain above it, and then G period में हमें एक breakout मिला, and then a consolidation. So that is why I marked this in the 30 minutes period.
जस्ट टू नो दैट कि हमें ब्रेकआउट कैसे और कहाँ मिलता है। और यहाँ पे ये जो सी पीरियड था, इसमें ये ऑक्शन फेलियर था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे भी मार्क कर लिया था। So these things you will, as you keep observing, you will also learn how to identify the auction failures and other things. निफ्टी भी देख लें। निफ्टी में क्या हुआ था, सेम एक पुअर हाई है, एक पुअर लो है, एक मीडियम आई भी है मेरा ख्याल इसमें, बिकॉज आई डिडंट वर्क ऑन निफ्टी एट ऑल टुडे। या इट्स अ मीडियम आई भी है। वी गॉट अ रेंज एक्सटेंशन हमें 1 IB से ऊपर ही मिला है। आई एम वेरी श्योर वी हैव गॉट अ रेंज एक्सटेंशन ऑफ मोर देन 1 IB। लेट मी चेक। यस, 1.5 IB का रेंज एक्सटेंशन मिला है। वॉल्यूम एरिया का शिफ्ट हुआ है ऊपर। दिस वी डोंट नीड नाउ, राइट? This is one volume area, this is the other volume area or POC area. Now all you have to see is अगर ये ऊपर खुलता है, does it repair this or does it come down to repair this? ये ओपनिंग पे ही चलता है, there you can't guess what's going to happen. Let us see the opening, let us see the buyers coming in, let us take a call accordingly. Why predict? अभी तो all options should be open, and let us see what type of rotation factor we have. It is definitely going to be positive. 12 का रोटेशन फैक्टर है, कल एक बैलेंस डे बनने के बहुत हाई चांसेस हैं, एंड लेट्स होप दैट वी जस्ट डोंट गेट अ रोटेशन नॉर्मल डे टाइप ऑफ स्टफ। नॉर्मल डे में मजा नहीं आता है। I hope the market goes up and makes another high or comes down, or there is some movement during the course of the day. No movement days are very boring. So treat this as 2 days. Treat this is a very lean structure. I would not like to कह सकते हो डबल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वैल्यू तो ऊपर ही बना है। एक ये IB को मार्क कर ले सकते हैं। दिस IB may act as a support, right? This poor low needs to be repaired, needs to be visited. Poor high needs to be repaired, needs to be visited. So we have to wait and watch tomorrow and see where the market opens and how the value POC forms. Do we, the highest possibility is that open inside or above the upper distribution, और उसको हायर टेस्ट करे, पुअर हाई को क्लीन करे, एक अर्ली रोटेशन अपवर्ड मिले, and the market attempts to expand higher value. Acceptance above today's upper distribution वो हमें कंफर्मेशन देगा कि बायर कंट्रोल है, and could lead to a trending continuation. This has around 60% chances. But a retest of lower distribution and yesterday's volume POC is also possible on retracement. And if buyers defend these levels again, bullish bias remains, and we offer the buy on dip strategy over here can be followed. Uh, just do try to understand this. Don't base your trades on what I'm telling you, right? And there is a very low probability of the market going down, but then the probability is always there. I would uh, not give much value to the probability of the market crashing down. Friends, let us meet tomorrow after the market hours and with another video and see. Tomorrow is the last working day of the week, if I'm correct. And let's meet then on Monday. Bye bye. See you. Thank you. And of course, before I close, define your risk before you define your profits. That is very important. See you.